Unit 2 alpha decay experiment result on alpha decay, alpha spectra, Ginger neutral region, theory of alpha decay, beta spectra, Fermi theory of beta decay, Sargent's law, K urine plots, allow and forbidden transition, parity violation and in beta decay, detection of neutrino lungs, बचाव एक्सप्लोज विवरण प्रदर्शन यही सब है. अल्फा कामा अल्फा कामा बीटा एंड laser gestation. The gestation of the three distinct types of radiation demonstrated by the following simple experience. A small quantity of radium R is placed the bottom of a small drill in the blocks photographic plates. A fair beam of radiation for R will issue through the holes. This leads block is plugged inside an evaluate chamber to avoid absorption for the ray. The photographic plate P is the placed at a distance above the leads block to restrain ray. A strong magnetic field is applied at right angles to the plane of the figure are directed away from the leader. After a fairly long exposure, the photographic plate is developed. Three distinct lines will be found on the photographic plate. The alpha particles will be deflected towards the left, indicating that they are positively charged. The beta particles will be deflected toward the right, showing that they are very charged. The gamma ray are not deflected and hits the plates P strength. This shows that the R ray are uncharged or neutral ray. If an electrostatic field is applied in place of the magnetic field is figure 2, the beta ray are deflected toward the positive plates, the alpha ray towards the negative, and gamma ray do not bend at all. Short properties of alpha ray. An alpha particles is helium nucleus consists of 2 photons and 2 neutrons. It carried 2 units of positive charge. Alpha particles shot out from radioactive substance have high velocity ranging from 1.4 × 10⁻⁷ to 1.7 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड. They moves along straight line. Their tracks can be observed in the Williams clouds chamber. They produce intense ionization in the gas through which they passed. Their ionizing power is 100 times greater than that of the beta ray and 1000 times greater than that the gamma ray. They affect the photographic plates, but the effect is very feeble. They produce fluorescence when they fall on the substance like Ba, beryllium, platinocyanides, zinc sulfide. The fluorescence can be observed through a low power microscope. They are detected by electric and magnetic field. This shows at the charge they produce a heating effect. The evaluation of heat is due to the stoppage of alpha, beta and gamma rays by the radioactive substance. Properties of beta rays. Beta particle possess negative charge and mass equal that of the electrons. दूसरा, all the above beta particle emitted from a substance do not have the same velocity. The velocity of the beta particles emitted by a substance range continuously from 0.3 to 0.99 c. At high velocity, E/m is found to decrease, indicating an increase in the mass of the particles. According to Einstein equation, m equal to m naught बटा के अंडर रूट में 1 - v² बटा के c square. Their Winging power is between low and hence range is large. They produce
uh, fluorescence in the barium platinum selenide will meet etc. They are deflected by electric and magnetic field. Their direction of deflection indicates that they are negative particles. Then penetrate through thin metals foil and their penetrating power greater than that of alpha ray. Atma, the value of E by M for beta ray was proved to be the same as that of cathode. The charge on the beta particle was observed to be the same as the charge on an electron. Therefore, beta ray identical with electrons. Properties of gamma ray. Gamma ray are electromagnetic wave of very short wavelength. The wavelength of the gamma ray range from 0.005 angstrom to 0.5 angstrom. They are not charged particles. They are will be the velocity of lights. They produce fluorescence and affected a photographic plate. तीसरा, दे आयोनाइज द गैस थ्रो विच दे पास बट द आयोनाइजेशन प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल. चौथा, दे आर मोर penetrating than even beta ray. They can even pass through an ions plates of 30 semi thickness. पाँचवा, they are not affected by electric and magnetic field. छठवां, they are diffracted by crystal like X-ray. Theory of alpha decay. One having nuclei will A is greater than 200 undergo alpha decay. The alpha particles emitted from nuclei have a discrete energy spectrum and consists of several groups. Usually, the most intensive is the group with alpha particles are highest energy. The existence of several groups of alpha particles is called the fine structure of alpha spectrum. Before emission, the alpha particles can be considered to be inside the nucleus. Coulomb's law is applicable when the alpha particle is outside the nucleus. When the alpha particles is inside the nucleus or very close to it, Coulomb's law does not hold good from an alpha particle of charge Ze and a nucleus of charge Jz is separated by a distance r. The potential energy is given by b suffix में r equal to 2e क्वेश्चन में z minus 2 क्वेश्चन में e अपन 4 pi epsilon naught r f equal to 1 अपन 4 pi epsilon naught q1 q2 बटा r स्क्वायर. b suffix में r equal to 2 क्वेश्चन में z minus z क्वेश्चन में e स्क्वायर बटा के 4 pi epsilon naught r. Here z minus z is the atomic number of the daughter's nuclei and attracted potential emitted. The potential will be represented. Force E21, E3, E2, E1 are when r is less than r naught. The alpha particle is within the potential well and its is bounded by the nucleus. Here r naught is the equal to the sum of the radii of the nucleus and the alpha particle. According to wave mechanics, an alpha particle can have different energy level E1, E0, E1, E2, E3, etc. within the potential will only an alpha particle at level E3 or above can come out of the potential well. In the case of radioactive element, the height of the potential barrier is about 9 megavolt, but uranium emits alpha particles of the energy 4 megavolt. Classical mechanics cannot explain how a particle having an energy of 4 megavolt can came out of the well having of a potential barrier is megawatt. Nucleus can the founded with the wave mechanics and Schrodinger equation. According to it is possible from the alpha particle to the through the potential barrier even though its Ke is less than the potential energy of the height of potential barrier. This probability of leaking of an alpha particle through the barrier is called the tunnel effect.
the alpha particle within the nucleus must present itself again and again at the barrier surface until condition at the ripe for transition leakage relation between the lambda and p alpha particles spectra oblique alpha spectra is the radioactive substance emitted alpha particles of some fixed energy. The several radiation nuclei emitted alpha particle of different energy falling within a narrow range. Example, consider the uh, nuclei which decay into the 81 Te 238 nuclei after emitting an alpha particles. The emits 5 groups of alpha particle within energy 5.721 5.728 5.873 6.611 and 6.201 megavolt. The emission of group of alpha particle within different energy suggested that the nuclei may be exist a number of discrete excited energy state above the ground state. The parent nuclei decay from its ground state. The any one of the several excited state are the ground state of the daughter nuclei. The daughter nuclei, the form of an result of disintegrated of the exist in several excited energy state A, B, C, D is the ground state and the A is the highest excited state of the daughter nuclei. Each excited state has got some energy which it gives up in the form of R radiation during its transition to the ground state. When a parent nucleus goes from its ground state to the ground state for 5 daughter nuclei, it emits during such a transition and alpha particles of maximum energy alpha. The energy discrete nuclear lever of the theorem alpha, alpha 4, alpha 3, alpha 2, alpha 1 5.709 मेगावोल्ट 5.729 मेगावोल्ट 5.873 मेगावोल्ट 6.611 मेगावोल्ट 6.02 decay of parent nucleus the into various excited level of the daughter nucleus. The any transition from the ground states of the parent nucleus to the any one of the excited state of the daughter nucleus will be give the rise to alpha particle with smaller energy alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 and alpha 5. The transition from any excited state to the ground state involve the emission of R rays. The energy of R rays photons have been measured and to be equal to the energy difference one of the excited energy saturated the ground state. Thus the alpha spectra provides a conclusion evidence of the existence of distorted energy levels in the nucleus. Long-lasting Gamma's theory of alpha decay, Ginzburg and Newton's law. Classical physics fails to explain alpha decay. Quantum mechanics provides a successful explanation of the problems of alpha decay. The basic Newtonians of this theory are an alpha particle may exist and extends within a heavy nucleus. Alpha particles is in constant motion. P bounce back and forth from the various. Suppose that the many moments only one alpha particles exist as such in nucleus. Find that it moves back to forth along nucleus diameter. Then V is equal to V upon 2 pi to R. Equation number 2, where V is equal to velocity of alpha particle, R is equal to nuclear radius. Since V is greater than T according to the classical physics, P is equal to 0. इतना आ गया. The probability P can be calculated quantum mechanics using WKP perturbation theory. According to this theory, log EP equal to -2 बटा के h बटा के 2 पाई L2 L1 अंडर रूट में 2m in bracket V of z minus T dx3, where m is equal to mass of the alpha particle, V is equal to 2 pi z e square upon 4 pi epsilon naught x. In the electrostatic potential energy of an alpha particle at the distance x from the center of the nucleus from charge Z E, R is equal to nucleus radius
T is equal to ke of alpha particles, just T equal to T is greater than V of x. The regions from k is equal to r to x is equal to r1 is called the thickness of the barrels. We have log base EP is equal to 2 upon h upon 2 pi L1 r1 अंडर रूट में 2m कोष्टक में 2z ई स्क्वायर बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस टी डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, वेन x इक्वल टू r1 t इक्वल टू v t इक्वल टू 2z ई स्क्वायर बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r log e p इक्वल टू 2 अपन h बटा 2 पाई अंडर रूट में 2mt r इक्वल टू r1 अंडर रूट में r1 माइनस x डी एक्स log बेस ई पी इक्वल टू माइनस 2 अपान h अपान 2 पाई अंडर रूट में 2mt r1 कोष्टक बंद कास इनवर्स r अंडर रूट में r बटा r1 माइनस r अपान r1 अंडर रूट में 1 माइनस r अपान r1। द withdrawal potential is very log compared with the nuclear radius, r is greater than r, therefore cos inverse अंडर रूट में r अपान r1 इक्वल पाई अपान 2 माइनस अंडर रूट में r अपान r1 एंड अंडर रूट में 1 माइनस r अपान r1 इक्वल टू 1। हेंस log बेस ई पी इक्वल टू माइनस 2 अपान h अपान 2 पाई अंडर रूट में 2mt r1 कोष्टक में पाई अपान 2 माइनस 2 अंडर रूट में r अपान r1 पुट r1 इक्वल टू 2z ई स्क्वायर बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी वी एट आंसर log बेस ई पी इक्वल टू 4e अपान h अपान 2 पाई m बटा के r एप्सिलॉन नॉट के खाते 1/2 z के खाते 1/2 पी आर के खाते 1/2 अपान ई स्क्वायर बटा के h अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m बटा के 2 का खाते 1/2 जेड टी के बाद माइनस 1/6 सिंस लेमडा इक्वल टू वी ऑफ पी log बेस ई लेमडा इक्वल टू log बेस ई न्यू प्लस log बेस ई पी log बेस ई लेमडा इक्वल टू log बेस ई कोष्टक में वी अपान 2r प्लस log बेस ई पी log बेस ई लेमडा इक्वल टू log बेस ई कोष्टक में वी अपान 2r प्लस 2.97 अंडर रूट में 2k चार्जिंग द बेस ऑफ log कोष्टक में e प्लस ई टू 10 log 10 लेमडा इक्वल टू log बेस 10 कोष्टक में वी अपान 2r 0.4343 2.97 अंडर रूट में 2r माइनस 3.93 जेड अपान आर log बेस 10 लेमडा इक्वल टू log बेस 10 वी अपान 2r प्लस 1.929 अंडर रूट में 2r माइनस 1.72 जेड अपान अंडर रूट में r। The change in atomic number and the numbers radius are negligible where compared to the change in energy. The first term is also same. The heavier nuclei. So equation 8 reduced to log base 10 lambda equal to c plus dt minus 1/2 9 where c and d are constant. Equation 9 so the at the emitter having lesser decay constant emit alpha particle of greater energy T which is ginger stirred neutral law. Alpha decay the far of number of alpha active nuclears. A plot of log base 10 lambda where z t खाते minus 1/2 is shown in figure 25 30 35 40 45 z अपान डेल टी माइनस 10 0 10 log base 10 The straight line has slope 1.72 as predicted by the theory. The intercepts on the y-axis gives the value of log base 10 v upon 2r plus 1.29 under root में zr. This can be used to determine the value of nucleus radius r. The nucleus radius calculated in this way comes out to be the same orders of obtained from the scattering experiment. Further, this theory makes understables for numerous various in half-life with the integration energetic alpha particles are lived. This correction of the lifetime and use the alpha particle is predict equation log base 10 lambda equal to log 10 v to r 1.29 under root में z r. Beta spectra. The energy of particles cross ratio active elements are determined by measuring the radii of curvature of their path in a magnetic field of known flux density b. The circular path traversed by the beta particles of the velocity v is governed by the relation b equal to m v square upon r v equal to b r कोष्टक में e upon m
from the geometry of the arrangement. Radius of circular paths r can be formed. The value of E beta k m can be assumed. Hence the velocity v can be calculated. The particle moving with the very high velocity, the kinetic energy of the particles ई सफिक्स में के यम सी स्क्वायर माइनस यम नाट सी स्क्वायर, ई सफिक्स में के इक्वल टू यम नाट सी स्क्वायर अंडर रूट में 1/1 माइनस भी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर कोष्टक के बाद पावर 1/2 माइनस 1। एक्सप्लेन कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द मास ऑफ द बीटा पार्टिकल विथ a kinetic energy of 0.5 megavolt. If the beams of such particles enters a uniform magnetic field, find the flux density required to cause them to transverse a circular r radius 0.1 meter. सॉल्यूशन गिव्स ई सब इसमें केज को 0.5 एम ई भी ई सब इसमें केज को 8.01 गुणे 10 खाते -14 जे एम नाट इक्वल टू 9.11 गुणे 10 खाते -31 के जी सी इक्वल टू 3 गुणे 10 खाते 8 मीटर प्रति सेकंड भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वी है इस इसमें केज को एम नाट सी स्क्वायर कोष्टक बंद 1 अंडर रूट में 1 माइनस भी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर -1 8.01 गुणे 10 खाते -14 इक्वल टू 9.11 गुणे 10 खाते -31 क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में 3 गुणे 10 खाते 8 का होल स्क्वायर 1 रूट में 1 माइनस भी स्क्वायर बटा 3 गुणे 10 खाते 8 बीज कलू 2.59 गुणे 10 खाते 8 मीटर प्रति सेकेंड बीज कल टू 0.863 सी मास ऑफ 2 बीटा पार्टिकल्स एम इक्वल टू एम नॉट बटा के अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा के सी स्क्वायर एम इक्वल टू 9.0 गुणे 10 खाते -31 बटा के अंडर रूट में 1 माइनस क्वेश्चन में 0.863 का होल स्क्वायर एम इक्वल टू 1.8 गुणे 10 खाते -30 के जी। The mass of these beta particles is 1.98 meter second. Magnetic flux density B E volt equal to mv square बटा के r बीटा इक्वल टू mv बटा के ई आर बीटा इक्वल टू 1.8 गुणे 10 खाते -30 गुणे 2.59 गुणे 10 खाते 8 बटा के 1.6 गुणे 10 खाते -19 गुणे 0.1 बीटा इक्वल 0.02914 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। Magnetic spectrograph beta spectra. The source is the radioactive substance S under study coated on the fine wire A and B of diaphragm. Use the limiting the beams of the beta particle. G is ginger counter beta rays from the source at the S are bent around by the magnetic field and the focus on the aperture. The number of the beta particles entering the aperture of the counted at a given value of the magnetic field of the intensity beta. The intensity of magnetic field is then changed to a new value and the number of beta particles entering the apparatus O is again counted. In this manner the velocity distribution of the beta particle is determined. The continuous beta rays spectrum of radium E is shown in figure. The waves the curve first rises to alpha maximum and then decreases to 0 at a well defined velocity which correspond to the maximum velocity of the beta particle. The maximum energy the beta ray particles give a continuous spectrum now of the beta particle 0 4 8 12 6 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 energy of at beta particle in m suffix in our there are approximately two distribution beta rays spectrum, one of the sharp the line spectrum and the other a continuous spectrum. The lines correspond to the beta particle emitted with the discrete energy. The continuous spectrum is due to a continuous spread of energy among the emitted the beta particle having a fixed maximum value of the energy. The upper energy limits of the continuous beta particles spectrum is characteristics of the radioactive atoms conserve summon
फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा पार्टिकल, द न्यूट्रिनो थ्योरी ऑफ बीटा पार्टिकल। इन 1934 फर्मी डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस बीटा रे स्पेक्ट्रम। दिस थ्योरी इज called neutrino theory of beta particle. According to this theory, a beta particle and the neutrino and created a in the nucleus, and both are emitted simultaneously. The total energy of these two particles is a constant which is equal to the ins points energy observed in the beta ray spectrum. This maximum energy is shared by the beta particle of neutrinos and also by recoiling nucleus. The E will carry the maximum energy when the energy of neutrinos is zero. In L other case, electrons will carry an energy less than the maximum. The sum of the energy carried by the electrons and the neutrino will always to be the same. This energy may be shared by the two particles in the proportion. Hence it explains the continuous beta ray spectrum. When the nucleons shift from the neutrons quantum state to the proteins quantum state, electrons and antineutrino are emitted. This process is represented by n tends to p plus e plus b. In ordering beta decay, it is an antineutrino that's emitted. The emitted positron emission correspond to the conversion of a nuclear protons into a neutrons, a positron, and the neutrinos p tends to n e plus b. Positron emission leads to a daughter nucleus of the lower atomic number Z, while leaving the mass number of A unchanged. Negative and positive beta decay may be represented as ZXA tends to Z plus A XZ E minus B by ZXA tends to Z minus 1XA plus E plus B. The electron, neutrino, and products nucleus share amongst the energy, angular momentum, and linear momentum available from the nuclear transition. Thus, the neutrino theory of beta decay successfully explains the continuous energy spectrum of the beta ray. Detection of neutrinos. Rain and Cowan made use of the abundant pressure supply for antineutrino emitted from a nuclear reactor. Energetic antineutrino can be deflected by the reaction V bar plus P tends to N plus beta plus. The experimental arrangement is shown in figure. Target protons 0.5 megavolt, path neutrons delivering singles. The an emission beam of the processing furrow and nuclear reactor is allowed to the transfer last plastic tanks filled with an solution of cadmium chlorine CdCl2. The tanks is surrounded by the may of photo multiplier tube. Suppose an antineutrino is observed by the proton. This system decay by beta plus emission to the neutrons. Thus 1h1 plus v bar tends to 0n1 plus itna. The position combine with the electrons and create beta gamma photons, which are detected by the photo multiplier tube. The moderated is showed by the slowed down by collision with protons in finally captured by a cadmium nucleus when the gamma photons are emitted. Thus 48 C alpha 113 plus 0n1 tends to 48 CD 144 114 plus 3 gamma. The almost simultaneous detection of these gamma photons by the tubes stabilized beyond all responsible doubt the another rise anti-neutrino Sargent's law. The decay constant lambda, which is equal to reciprocal of the means decay lines time I obtained by calculating possibility the units times of emission of beta particle with moments value beta
between 0 max lambda is equal to 1 upon tau lambda is equal to g square mod of m square बटा के 2 पाई क्यूब सी क्यू एच कट क्यू 0 टू पी मैक्स अंडर रूट में एम स्क्वायर सी के खाते 4 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर मैक्स माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर सी के खाते 4 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डी पी क्वेश्चन नंबर लेट अस डिफाइंड मेन P and M C and not is equal to P max now 1 upon tau is equal to G square mod of M square M के खाते 5 C खाते 4 upon 2 pi Q H कट 7 do and F half N naught is equal to 0 to N naught कोष्टक में अंडर रूट में 1 प्लस N naught का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 प्लस N naught स्क्वायर कोष्टक में N स्क्वायर डी एक्स 3 now let F of Z comma N naught is equal to F of N naught therefore the final expression for the tau 1 upon tau is equal to g square mod of m square m के खाते 5 सी खाते 4 upon 2 pi q h कट के खाते 7 f of z comma n naught 11 it is seen that the if m of mod of m square does not change then f of z comma n naught is equal to constant 5 the product f dot tau is measured of the forbidden of a transition the lowest f dot tau values correspond to the transition which are permitted by selection rules it is also seen that if the integration of the equation 1 is carried out in terms of its point energy E sub इसमें P max then the decay constant lambda is found to be proportional to the 5th power of the end point energy lambda is equal to k क्वेश्चन में E sub इसमें P max और log base e lambda is equal to log base e k plus b कट log base e सब इसमें P max 3 5 this equation is known as Saginet's law and holds good fairly with the Saginet's curve is shown as below log e खाता lambda u सब इसमें x t h b a c dash u सब इसमें theorem can Curie's postulation in 1936 Curie was suggested a theory for plotting the experimental result we have p of p d sub p g square बटा 2 pi q mod of p m if का होल स्क्वायर f क्वेश्चन में z कामा ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर p स्क्वायर डी पी इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज अंडर रूट में p ऑफ p सब इसमें e अब्लिक f ऑफ क्वेश्चन में z कामा e सब इसमें p सब इसमें e का होल स्क्वायर इक्वल टू c क्वेश्चन में e नॉट माइनस e सब इसमें e अंडर रूट में p ऑफ p e बटा के f क्वेश्चन में z कामा e सब इसमें e p e का होल स्क्वायर इक्वल टू c क्वेश्चन में t नॉट माइनस t e इक्वेशन नंबर 2 वेयर t naught and t e are ke of the beta particles a plot of the function on the LHS of above equation against t sub इसमें should be a straight line intersecting the energy of exist to t naught. This graph is known as Curie plot. Curie plots was very good means for the determines the maximum energy of the beta spectrum. Maximum energy of electrons and positron obtained by Curie plots are 571 and 657 Kelvin respectively for beta rays emitted from the 64 Cu. Theory of the beta decay gives a relationship between the decay counts of the nucleus and maximum beta equal to energy E sub इसमें beta max upon E sub इसमें the total probability per second of the emission of beta particles of all momenta from 0 to maximum P sub इसमें lambda equal to 0 to P sub इसमें P of क्वेश्चन में beta d P sub beta lambda equal to C 0 to P sub इसमें f z कामा P beta sub इसमें beta p स्क्वायर सब बीटा ई सब इसमें माइनस ई सब इसमें बीटा का होल स्क्वायर डी सब इसमें पी बीटा वेयर सी इक्वल टू जी स्क्वायर बटा के 2 पाई क्यूब सी क्यू एच कट एम सब इसमें इफ का होल स्क्वायर डू द इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू सी सब ई सब इसमें बीटा माइनस ई सब इसमें बीटा बटा के एम सब इसमें ई सी स्क्वायर अपान एन सब इसमें बीटा इक्वल टू पी सब इसमें बीटा बटा के एम सब इसमें ई सी 3 वेयर ई सब इसमें बीटा इक्वल टू बीटा एनर्जी एन सब बीटा इक्वल टू बीटा मोमेंटम दस वी हैव द एफ सब इसमें बीटा इक्वल टू डब्ल्यू सब इसमें एम माइनस डब्ल्यू सब इसमें पी बटा इक्वल टू अंडर रूट में बी सब इसमें
एम का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सफिक्स में नॉट स्क्वायर सी खाते 4 माइनस अंडर रूट में पी सफिक्स में बीटा का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सफिक्स में ई स्क्वायर सी खाते 4 एम सफिक्स में ई सी स्क्वायर क्वेश्चन में 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बीटा चौथा यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 लेमडा इक्वल टू जी स्क्वायर बटा के 2 पाई क्यूब सी क्यू एच कट एम सफिक्स में इफ का होल स्क्वायर 0 टू एन सफिक्स में एफ कामा एफ ऑफ जेड कामा नीटा एम सफिक्स में ई स्क्वायर सी स्क्वायर नीटा 2 पाई क्यूब सी क्यू एच कट एक्स एम सफिक्स में ई स्क्वायर सी खाते 4 क्वेश्चन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स सफिक्स में एम के स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एम सफिक्स में ई माइनस डी एक्स लेमडा इक्वल टू जी स्क्वायर सी के खाते 4 एम सफिक्स में ई के खाते 5 बटा के 2 पाई क्यू एच कट के खाते 7 माडा एम सफिक्स में इफ का होल स्क्वायर 0 टू एक्स सफिक्स में एम एफ ऑफ जेड कामा एन कोष्टक में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स सफिक्स में नीटा सफिक्स में एम का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एन स्क्वायर नीटा स्क्वायर डी एक्स 5 फ्रॉम लो जेड एलिमेंट्स एफ ऑफ कोष्टक में जेड कामा एन इक्वल टू 1 वी गेट इक्वेशन 5 बिकॉम्स लेमडा इक्वल टू जी स्क्वायर सी खाते 4 एम सफिक्स में खाते 5 बटा के 2 पाई क्यू एच 7 माड ऑफ इफ का होल स्क्वायर 0 टू एक्स सफिक्स में एम कोष्टक में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स सफिक्स में एम स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स लेमडा इक्वल टू जी स्क्वायर सी खाते 4 एम सफिक्स में के खाते 5 बटा के 2 पाई क्यू एच क्यू एफ सफिक्स में ईट स्क्वायर एफ सफिक्स में एक्स एन 10 द probability of the beta decay increasing with the increasing value net the for so m suffix में if the constant if the f suffix में m is the centrist constant we have lambda इक्वल टू 0.693 बटा के टाउ टाउ हेल लिटरेचर देन इक्वेशन 6 बिकम्स जी स्क्वायर सी खाते 4 एम सफिक्स में ई खाते 5 बटा के 2 पाई क्यू एच कट क्यू माड ऑफ एम सफिक्स में इफ का स्क्वायर एफ ऑफ नीटा एम लाग 2 बटा टाउ और एफ ऑफ एन सफिक्स में एम क्वेश्चन टाउ इक्वल टू 2 पाई क्यू एच कट 7 लाग 2 बटा के जी स्क्वायर सी खाते 4 एम सफिक्स में ई खाते 5 बटा के एम सफिक्स में इफ का स्क्वायर एफ ऑफ नीटा सफिक्स में एम इंटू टाउ इक्वल टू कांस्टेंट 7 if equation 7 the value of constant terms in depend upon the square of the matrix elements m suffix में if का whole square the product of m neta suffix में m tau is known as Camperedor half life therefore small value of the f of x suffix में m tau indicates longer probability of beta decay and vice versa. Now we have from equation 6 एफ ऑफ कोष्टक में एक्स सफिक्स में एम इक्वल टू 0 टू एन सफिक्स में एम कोष्टक 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एम माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी सफिक्स में एफ ऑफ एक्स सफिक्स में एम इक्वल टू माइनस 1/4 एक्स एन सफिक्स में एम माइनस 1/12 एन सफिक्स में एम क्यू प्लस 1/30 एक्स कहते 5 प्लस 1/m अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाग कोष्टक में एन सफिक्स में एम प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एन स्क्वायर सफिक्स में एम इक्वेशन 8 gives the limiting value f of n suffix में m for large and small n suffix में m for tends to n suffix में m is greater than 5 then tend to कोष्टक में f of n suffix में m कोष्टक 1 similarly 1/30 n 5m के बाद 5 for n suffix में m is less than 0.5 then f of n suffix में m similarly 2/105 n m के साथ 7 now let f of x suffix में m a plane wave for the electrons this integration a function f of z comma x suffix में is placed of the x suffix में then f of z comma n suffix में tau equal to 2 pi q h कट के खाते 7 लाख 2 बटा के जी स्क्वायर सी खाते 4 एम सफिक्स में 5 बटा के एम 2 और एफ ऑफ जेड कामा एक्स सफिक्स में नॉट टाउ इक्वल टू कांस्टेंट द कांस्टेंट ऑन द आरएचएस इन्वॉल्व्स द एम सफिक्स में if square which cannot evaluated exactly the allow transition if the two unity if the valuer of the evaluate to the different Witten image using the experimental value of the tau then the value of found grouped in certain region as shown in figure नंबर ऑफ केसेस केस 3 5 10 15
3 4 5 7 8 9 10 log 10 ft distribution of log ft value. The beta emitters classify into different categories of follow log जब सभी को tau is equal to T24. The beta transition are most probable for the nuclide in this group. They are called allowed and forever or 2 log tau 4.5. The beta transition are allowed but not forever or simply allow their number of largest probability of transition for those nuclei is lower than the first. तीसरा the f of t equal to 9. They constitute for the first forbidden transition for the higher order, for which the transition probability being longer than the first and second. Parity valuation in beta decay. Parity has been defined as one of the fundamental properties of the nucleus, and it was believed that like spin, momentum, energy into etc. parity is converted in all nucleus processed. The violation of parity if the process of the beta decay was experimentally demonstrated by Madam W. Smith-4 in the decay of cobalt. The experimental sets of used by the Madam through the longer shown in figure. Schematic diaphragm of another expansion. Null detector test semi pumping tube for vacuum space. Nuclear rods RE strong vacuum space. Beta counting in thread crystal. Mutual induction thermometer coil. स्पेक्ट्रम यूजिंग ऑफ न्यूट्रस नॉन न्यूट्रस यही सब है. The beta particles were detected by Encreans crystal which is located inside the vacuum chamber near the co-source to measure the polarization of cobalt 16 nuclei to NAI. Gamma ray stimulation counter were used, one in the equilibrium planes and other near the polar position. The observed gamma rays anisotropy provided a measure of polarization and hence the temperature of sample for gamma rays anisotropies. Gamma anisotropies इलेक्ट्रॉन काउंटर पोलर काउंटर गामा एनिसोट्रॉपी यही है. देख लीजिए. The gamma rays measure the effect of polarization after the minutes. The nuclei become sufficiently warm so that the thermal causes of the anti-nuclear becomes random and the gamma entropy disappears. The beta symmetric is the significant indicator the number of electrons in the direction of the field and the number of the emitting opposite direction. The figure responsible for parity in the beta decay is neutrino. The anti-neutrino emitted the beta decay process is the Fresnel's two named is angular momentum moves as the right-handed screw will be ejected predominantly in the direction the angular momentum vectors. Fissions per seconds kg दिन घटित हुआ 35 the Woods 1000 बार ऑपरेशन assuming that the average energy of 200 megawatt is released per fission and so rate of developments of the energy of reactor 3000 किलो 13 गुणे 10⁶ जूल प्रति सेकंड एनर्जी रिलीज्ड पर fission 200 मेगावाट 200 गुणे 1.6 गुणे 10⁻13 -13 32 गुणे 10⁻32 12 number of the atom undergoing the position per unit 3 गुणे 10⁶ 32 गुणे 10⁻2 9.4 गुणे 10⁻16 number of atoms undergoing fission in the 1000 hours equal to P
4 गुणे 10 16 1000 गुणे 60 गुणे 60 3.384 गुणे 10 23 अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस 6.025 गुणे 10 26 एटम्स ऑफ यू खाते 235 वेज 235 kg वेट ऑफ 3.284 गुणे 10 23 एटम्स ऑफ यू खाते 235 235 गुणे 10 3.384 गुणे 10 23 अपान 6.025 गुणे 10 26 0.3 3 2 5 सॉल्व कंप्लीट। ओम नमः शिवाय।